So first of all, the awareness part that I was personally not aware that how we can approach into this coaching. In the Hmm. starting, I made a mind, yes, I had done my B.Ed. So how would I would go into the teaching? First of all, I was not aware into that. So Hmm. the first channel that I got onto the YouTube, and I got to know that yeah, such kind of things exist. Like हाँ. this is the way they are guiding us, how we have to approach into the interview. So I joined then my test, and along with that I also gave the mock interview. Two mock interviews was conducted for me, I remember. So into that also ma'am gave me the feedback, like where all what all things have to be removed. I gave one mock interview that was not good into the starting also. So Hmm. again ma'am told me that you have to improve on all these elements and specifically focus on this part. Your content part is good, but on delivery how you can make it different. You have to हाँ. use certain diagrams or try to Hmm. use certain image which make it more interesting. So Hmm. on that part, I tried incorporating all those things. That was a really great thing where you got to know that what all loopholes you are doing or into your process. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इसमें वी आर वेरी स्पेशल मेंबर विद अस, जिसका नाम है रचना। रचना ने रिसेंटली एलएन का एक पीएनसीएफ का उनका एक ड्राइव चल रहा है। रिसेंटली उन्होंने पीएनसीएफ की ड्राइव क्लियर की है फॉर बायोलॉजी फैकल्टी, और आज उनसे हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हाउ शी हैज क्रैक द जॉब रोल। इंटरव्यू कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, हाउ शी हैज फेस्ड एवरीथिंग एंड हाउ फाइनली शी हैज क्रैक द जॉब रोल। उन्होंने अभी जॉब अपनी स्टार्ट भी कर दी है। सो शी इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हो ड्राइव्स काफी सारी आ रही है अभी रिसेंटली, तो रचना की ये एडवाइसेस, ये टिप्स जो वो देने वाली है आपको इस सेशन में, बहुत ध्यान से सुनना उन टिप्स को, क्योंकि वो हर टिप आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। ना सिर्फ एलएन के लिए, जितनी भी कंपनी है टेक में, सब में अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए टिप्स बहुत हेल्प करने वाली है आपको। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लर्न फ्रॉम रचना एंड हर जर्नी कि उन्होंने कैसे अपने इंटरव्यूज को क्रैक किया। तो रचना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड एज यू नो, हम सब बहुत खुश है इस चीज से कि आपने बहुत जल्दी अपना ये इंटरव्यू क्रैक किया है एलएन का। इतनी बड़ी ब्रांड मिली है आपको विद अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स जो वहां पे आपको मिल रही है। सो आज का ये वीडियो आपके बारे में है, आपकी जर्नी के बारे में है कि हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस, आपने अप्लाई कैसे किया, इंटरव्यूज कैसे थे, क्वेश्चन कैसे थे। पीपल वांट टू नो आउट देयर कि आपने कैसे इतनी बड़ी ब्रांड में अपना इंटरव्यू क्रैक करके एक फैकल्टी पोजीशन वहां पे सिक्योर करी। पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में जानते हैं, देन वील मूव कि आपने कैसे अपने इंटरव्यूज को क्रैक किया। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity where I can share my experience along with everyone so that it will be helpful to the people. And secondly, the kind of support you have given me or how we have to go throughout the journey, that was extremely grateful for me. Now, I would like to give my basic introduction. This is Rachna Singh. I've done my graduation as well as B.Ed, graduation in CBZ, that is Chemistry, Botany, and Zoology. So when it comes to that, how I basically got selected here. So firstly, the one thing that I noticed that you should be very aware with what all vacancies that are coming. First of all, we need an awareness. So in that part, your role was very much pivotal. I would say that a lot of vacancies that has been keep us updated, like these vacancies are coming on these all location and you can apply it at that point location. So that was is the first thing, that is the stepping stone. Like you need to have an awareness that where all vacancies are coming. Secondly, when we come for the lecturer role, the first thing that there should be a very much conceptual clarity of your like subject knowledge should be very clear. Along with that, your way of teaching, how you are communicating with the students, all of that also matters a lot. So there are two pillars for that. First of all, you should be very clear with your content, that is the conceptual clarity should be there. Along the side, you should be very good at speaking. You should be how you are presenting your content, how you're doing the board work, how you're engaging with the students. These all are also plays a significant role. So these two things
should be practiced beforehand for applying for any kind of interview, because all of a sudden randomly we cannot do these things in a few days. It Hmm. take nearly 2 to 3 months to practice all these things. So that practice will come over a period of time. That is not like Hmm. today's interview and I'm preparing yesterday. All of these things will not engage Okay. by that time. Hmm. Alongside, when you are done with your all part, you are very clear with your content, and this interview is just that you have to make your CV. That CV thing also plays a role, like where what you are targeting on, or what are your unique capabilities, like what kind of different pedagogical methods you use while teaching. So all of that has to be mentioned in CV. Your CV should be attractive enough that the HR picks up your CV from rest of the people. Now, Hmm. after that, when this your CV is selected, you will get a call from the HR, and after that, they will call you for the demo session. So first, in my case, there was firstly a written test. There was a short written test where they check that you are conceptually clear with the concept or not. They do not ask the theoretical question. For instance, if I have to give the example, like we know the different parts of the heart, but they didn't ask the parts of the heart. They asked how the blood flows into the different part of the heart. Hmm. Similarly, they ask different terms, but along the terms, they associated the application part of that. So Hmm. it's very important that we know anything, but there should be conceptual clarity. No more amount of rote learning, we would say, that survives into that. So Hmm. a lot of questions were conceptual based. Alongside, there were some of the questions which were aptitude based, like 5 to 6 questions were from the aptitude as well. But if you're very sure with your subject portion, that will suffice. Hmm. So after that, we had our demo session. So in case of the demo session, there would be an experienced faculty that would be sitting in front of you, and you have to give your demo to them on a particular topic. Because as and when your demo is over, they will ask the questions from your content. So they nearly, like in my case, I remember they basically asked 10 to 15 questions from that specific topic on which I presented the demo, because they know that we have come prepared with that topic. So Hmm. in that topic, if they are asking any sort of question related to that topic, you should be very much clear, and you should be very for sure that I am able to answer, because you have prepared that topic and you're presenting it. So there should not be any sort of mistake into that. Hmm. Secondly, a lot of questions I have applied into the PNCF, but the questions were not up to that level. It was from the senior section as well, where they are checking that you have that much, like edge, or you are that much flexible with your content or not. Like you're not too much precise that if I'm applying for PNC, I've just learned that topic, I'm not aware with any other topic. That should not happen. So there was a comprehensive set of questions that was combining from the botany and zoology. It was up till the foundational level as well, and up till the NEET level as well. Hmm. So after that, they just had some general question, like from where you have done your educational, what are your hobbies. So all that happened, and over a period of time, I got to know that my demo was okay, and they have selected me for the further round. Okay, perfect. Rachna, if you can mention few questions if you remember of your interview, of your test, whatever you remember, you can just mention those questions. Yeah, there was some of the questions from the live process, like they asked the conceptual thing, like how come the process of translocation. So in translocation, they asked me like which tissues are basically involved in the process of translocation, which tissues are involved in transpiration, what would happen if the amount of the air that is present in the atmosphere is basically getting reduced. So what will be the impact on the transpiration. So they Hmm. ask such kind of things, like application based questions were a lot of, like if the amount of the air around the leaf, that water content into the air is basically more, then the transpirational rate would basically reduce. So such kind of application based question they ask. Perfect. Okay. And what about the duration of the interview? How much long interview they take? What is the exact duration of the interview? If you can just mention some average duration. My demo was nearly for 15 to 20 minutes, and the question answer session was of 15 minutes only. So it took half an hour for whole process. Okay, perfect. Okay, great. And anything else you want to like signify or specify, like for people who are watching out there?
On my level, I feel that if you have the clarity into the concept, that clarity will definitely be reflected onto the other person who is sitting True. in front of you, is judging you, how you are teaching. So that conceptual clarity is very important into like teaching. Like you know every concept, how the things operate. That is definite, Perfect. Great. because we know apart from this how you're presenting it, the more you use the flow chart, the more you use the diagram, because biology is mostly associated with the diagrams only. Diagrams. So Yeah. how you make the diagram, how you present into that, so that It also matters. matters a lot. Perfect. Okay, and some people have the question kind aptitude. Do aptitude really matter in LN examinations? Because people are really confused. If they don't know aptitude, reasoning, are they eligible for test and all? Will they qualify their test? What is your comment on that? So in aptitude there was nearly 15 questions. ओके सो गाइज एक और मिसकंसेप्शन है एलन को लेकर के आई वुड जस्ट क्लैरिफाई दिस ये बातें चल रही है तो मेरे ध्यान में आ गई वो बात बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर एलन में फीमेल्स को नहीं लेते हैं तो रचना बीइंग अ फीमेल हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू फॉर पीएनसीएफ तो प्लीज हैव द क्लैरिटी अब एलन में फीमेल्स को भी लेते हैं वो लोग तो जो भी फीमेल्स ये सोच रही हैं कि हमारा नहीं हो पाएगा एलन में और ये सोच के आप अप्लाई नहीं कर रहे हो एलन के लिए तो आप ये गलत कर रहे हो आपको अप्लाई करना चाहिए नाउ एलन फ्लेक्सिबल टू टेक फीमेल्स एज वेल पहले ये बातें थी बिफोर सम टाइम 1 ईयर बैक ये बातें थी बट आज के समय में ऐसी कोई बात नहीं है दे आर गिविंग प्रेफरेंस टू बोथ द फैकल्टीज आप मेल हो आप फीमेल हो इक्वल वेटेज है जो नॉलेज आपकी होगी वहां पे जो आप आंसर्स करोगे दैट विल डिसाइड कि वो आपको लेंगे कि नहीं लेंगे सो हैव दिस क्लैरिटी फीमेल्स भी अलाउड है और फीमेल्स जा रही है इसलिए मैंने एक फीमेल का इंटरव्यू लिया आज इस सेशन में ताकि आप समझ सको कि रचना का हो सकता है तो आपका भी डेफिनेटली इसके लिए हो सकता है रचना एक और क्वेश्चन था वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स अबाउट डेमो इंटरव्यूज आपने प्रैक्टिस भी करी हमारे साथ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव प्रैक्टिस सो कुछ टिप्स जानना चाहेंगे आपसे कि पीपल इज प्रिपेयरिंग फॉर डेमो फॉर एनी कंपनी फॉर एनी जॉब रोल सो आपके हिसाब से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है दे शुड फॉलो इफ दे आर मेकिंग देयर डेमो व्हाट कैन इंप्रूव देयर स्किल्स इन डेमो Like what is basically teachings deals with, that is like if we are delivering any sort of content, how you are standing different from the other, so that it plays a very important role. Like your class should not be that much monotonous, like students how they will remember. So we should always try to incorporate trick into the class. Apart from this, we should try that how we can make interesting to the students. Like they are small kids, so we have to make interesting according to them. So that delivery parts plays a very important role. Like everyone is for sure of their content, every knows like how the process of transpiration or transportation occurs, so we all are aware of for that, but how you deliver to the students, that matters a lot. How you are making it is interesting, how you're presenting on the board, what different element you can add apart from the other, what extra you can do that would separate from the other individual, that can make you different from the other candidates. That is very important. एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव एज यू हैव जॉइंड एलन व्हाट अबाउट द कल्चर ऑफ एलन जो आप पढ़ा रहे हो फैकल्टीज यू आर सीइंग अराउंड तो क्या एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल So overall, it's a very great experience. सो गाइस यही है मैं हमेशा बोलता हूँ आपको वेन एवर यू जॉइन अ बिग ब्रांड लाइक एल फिजिक्स वाला लोग मुझे बोलते हैं सैलरी कम है सैलरी इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न एट दिस पॉइंट रचना की मेजर जो अचीवमेंट है वो लर्निंग है व्हेन शी गोस आउट फ्रॉम एल आफ्टर सम टाइम या वो यहाँ पे स्टिक भी रहती है तो फॉर दैट शी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग जो लर्निंग यहाँ पे मिलती है ना दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ब्रांड्स को प्रायोरिटीज दीजिए बिकॉज ब्रांड विल एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो योर स्किल्स आपकी नॉलेज आपकी स्किल्स वहां से ग्रो करेगी देन यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ तो इसलिए बोलता हूँ कि ब्रांड से अपना करियर स्टार्ट करने से एक वो जो पुश मिलता है ना आपको वो कहीं बाहर से मिलना बहुत मुश्किल है आपके लिए तो ट्राई स्टार्टिंग द करियर विद ब्रांड जो आपको सिखा सके आपकी लर्निंग में एक बड़ा रोल प्ले कर सके वहां पे तो रचना आपकी एक अच्छी जर्नी रही विद मेहता वॉइस वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स में डिस्कशंस करे सेशंस करवाए सो वन वर्ड इफ यू वांट टू से फॉर मेहता वॉइस मेहता वॉइस ने क्या रोल प्ले किया आपकी पूरी जर्नी में तो व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट So first of all, the awareness part, that I was personally not aware that how we can approach into this coaching. In the starting, I made a mind. Yes, I had done my B.Ed. So how I would go into the teaching? First of all, I was not aware into that. So the first channel that I got onto the YouTube, and I got to know that yeah, such kind of things exist. Like this is the way they are guiding us, how we have to approach into the interview. So I joined then. Then after that, I
gave like my test, and along with that I also gave the mock interview. Two mock interviews was conducted for me, I remember. So into that also ma'am gave me the feedback, like where all what all things have to be removed. I gave one mock interview that was not good into the starting also. So again Hmm. ma'am told me that you have to improve on all these elements and specifically focus on this part, or try to Hmm. use certain image which make it more interesting. So Hmm. on that part I tried incorporating all those things. So Hmm. that was a really great thing where you got to know that what all loopholes you are doing or into your process. ट्रू 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 सो गाइस, यही मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू टेक मॉक इंटरव्यूज फ्रॉम अस, वो आपकी स्किल्स में, आपकी एनहांसमेंट में आपको हेल्प करेगा। रचना जस्ट सेड दैट जब उन्होंने अपने मॉक इंटरव्यूज दिए, उनको ये फीडबैक्स मिले कि दीज डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये आप मिस कर रहे हो, ट्राई टू ऐड दीज थिंग्स। सो मॉक का ये रोल प्ले होता है जब वो आपको लाइफ में सिखाता है दैट क्या आप मिस कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, एक टेस्ट, एक मैथ से पहले एक टेस्ट प्रैक्टिस जरूरी होती है हमारे लिए, ताकि हम वहां पे बेटर परफॉर्म कर सके। सेम यहाँ भी है, इफ यू परफॉर्म बेटर इन मॉक, इफ यू लर्न कि मेरी गलतियां यहाँ पे हो रही है, आप डेफिनेटली ये गलतियां वहां रिपीट नहीं करोगे, जो आपके लिए बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा वहां पे। इफ आपके अंदर जो डर, फियर है वो निकल जाए, तो फॉर श्योर आपके लिए कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉक देने से एक वो प्रैक्टिस करने में आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि फॉर श्योर आप कोई भी इंटरव्यू किसी भी कंपनी का हो, आप बड़े आराम से उसको क्रैक कर लोगे। तो एज यू नो, वी हेल्प इन मॉक इंटरव्यू सेशंस ऑल्सो। अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि वो ऑप्शंस निकल गए हैं, वी डोंट हैव ऑप्शंस, ट्रस्ट मी, अभी ऑप्शंस बहुत सारे बाकी है। रोज वॉक इन ड्राइव आ रही है, ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप रेडी हो तो आई एम रेडी टू गिव यू ऑप्शंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स अ टू वे थिंग। आप एफर्ट्स करो, मैं ऑप्शंस दूंगा, एंड टुगेदर वील प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग द इंटरव्यू। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है एंड वांट्स टू ज्वाइन मेहता वॉइस फैमिली फॉर प्रैक्टिस, फॉर सेशंस, फॉर मॉक इंटरव्यूज, फॉर एचआर कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके लिए सिंपल मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उनको व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम आपसे गेट बैक कर लेगी, कॉल बैक अरेंज कर देंगे आपके लिए, जहां विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग, हाउ टू ज्वाइन द कोर्सेज एंड कैसे ये आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने वाला है। सेकंड, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां अपडेट्स आती है जॉब्स की, जो आपको ड्रीम जॉब सिक्योर करने में हेल्प करेगी। तीसरा, एक गूगल फॉर्म है हमारा, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप भर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी फॉर डाउट्स एंड क्वेरीज। और चौथा, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल है जो बहुत हैंडी है, डेली अपडेट्स आती है, हर ड्राइव की अपडेट वहां पे आती है, उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। वो आपके लाइफ में, आपके जॉब सिक्योर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और वो काफी हेल्प करेगा आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने के लिए। तो इट्स नेवर टू लेट गाइस। अगर आप अब से भी स्टार्ट करते हो, trust me, you'll get your job role very soon if you start practicing and if you give your best in all the conditions. तो अभी भी बोलता हूँ, join with us, connect us, inquiry कर लो, and try to achieve your dream job as soon as possible. तो रचना, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं पर इनके इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो पा रहे हैं, वो स्टक हो जाते हैं, या बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल पा रही है उनको। तो बिकॉज यू हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज, आपने बहुत जगह वर्कआउट किया है, so what do you suggest to them? What should they do if they are not getting the success in the interviews? Back to back success नहीं मिल पा रही है तो। Sir, one of the thing is that you should be very precise, like where you are lacking. We know हम्म, that if we have not get selected, we simply get disheartened into that process, हाँ, like true, we will not be able to do. But when it comes to why we are not able to do, we should be very precise, like what, हम्म, where I'm lacking. If I'm good into speaking, if I'm have a good command over the language, if I'm good into the content, we should be very clear. So where we are lacking, that should be precisely picked up, and we should work upon that skill. So if I'm not good into the content, then I should focus on content. If I'm not good into the speaking, then I should try to interact with the people. If I'm not good into presentation work onto the board, I should try making more and more diagrams, more and more flow charts. So we have to precisely pick up instead of just thinking that why we are not getting selected. That is not the solution, and ultimately we are the only one who have to work upon ourselves. Like mentors and all, they can definitely guide us, like sir has हम्म, given me a lot of guidance, but when it comes to ourselves, we have to be very clear where we are lacking. So if we know our loopholes, we have to work upon that, then it's true, definitely that we can go through the process. There's nothing like we cannot do. true, right. So guys, this is the thing I say everywhere in my videos also। मैं हमेशा बोलता हूँ कि you have to work on your loopholes। आप ही हो जो अपने आप को रोकते हो सक्सेसफुल होने से। If you want to be successful, just leave this barrier। अगर एक दो इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे,
कोई बात नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं लाइफ में जो फेल नहीं होता है, एवरीवन फेल्स, बट उठ के खड़ा होना और दोबारा से जाके अपने इंटरव्यूज को देना, दैट मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो जहां भी आप गिरते हो, लड़खड़ाते हो, कोई बात नहीं, एवरी नाइट हैज अ फ्रेश मॉर्निंग। तो फ्रेश मॉर्निंग फिर से स्टार्ट करो एंड गिव योर बेस्ट। ऐसा कोई इंटरव्यू बना ही नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाओ, बस वो एक एफर्ट चाहिए होती है, वो एक जील होनी चाहिए आपके अंदर, आप सारे इंटरव्यूज को बड़े आराम से क्रैक करोगे। एंड प्लीज टू थैंक रचना मैम, आज उनका क्लास था, अब उनके शेड्यूल चल रहे थे, देन ऑल्सो शी हैज स्पेयर्ड हर टाइम, रात में हमें सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज शी हैज गिवन हर टाइम। तो उनको बिल्कुल थैंकफुल रहना आप इस चीज के लिए, इज अ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, बहुत जगह पढ़ाया हुआ है पहले भी उन्होंने। एंड देन शी हैज शेयर द एक्सपीरियंस ऑन हर जर्नी बेसिस, जो उनकी जर्नी रही है उसके बिहाफ पे शी हैज गिवन यू ऑल द फीडबैक। टेक द फीडबैक्स फ्रॉम हर, डू थैंक हर एंड डू अप्लाई दीज टिप्स इन योर लाइफ ऑल्सो, ताकि आप जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें आपको ये चीजें हेल्प करें टू गेट योर प्रोग्रेस, योर सिलेक्शन। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड प्लीज डू शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जो क्वेश्चंस मैम ने बताए शायद वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम इंटरव्यू। बाकी हम मिलते रहेंगे और डिस्कशंस वगैरह ऐसे ही करते रहेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड वील सी यू सून। बाय बाय।